a different type of question in corporate failure and internal reconstruction. This is this is actually internal reconstruction. ठीक है, this is not sale or hive off or demerger वाले situation नहीं है. See, the idea behind internal reconstruction is very simple. They would never want a company to wind up. They would never want a company to get defunct and stop working. Because, see, a company or any entity, by the way, a business generates employment, not just for the owners, of course, they make a lot of money. But imagine if Adani were to close down. There are so many people who are constantly abusing, and I'm not commenting on the abuse of their position that they have done. I'm not commenting on that. What I'm saying is look at the number of people who are getting employment. Now, if that company were to shut down, those many people will lose employment. So, banks bolo, creditors bolo, whatever, they are always given a choice. Do you want this company to close down, or are you going to be patient enough so that we can revive the company? You might have to accept a slight delay in payment. We will compensate you by paying you a slightly higher amount of interest. You might have to give up a small portion of the amount you are supposed to collect from us. And the warning is clear. It's like somebody is blackmailing you. ठीक है, पैसे निकाल वरना I will do XYZ. People do that far more often than you can imagine. What you can tell is, listen to me. कितने मांग रहा है? 100 रुपए मांग रहा है. ओके, 10 रुपए दूंगा. लेना है तो लो, वरना निकलो. बिकॉज इफ यू क्रिएट अ सीन, यू आर नॉट गेटिंग 1 रुपी फ्रॉम मी. चुपचाप 10 रुपए लो, sign a confession letter that you are never going to blackmail me again, and move on with life. God forbid, should something like this happen to you, use this trick. This is the exact trick that we are going to use with the creditors. What we are going to tell them is, तुमको नाटक करना है, करो, एक भी पैसा नहीं मिलेगा. Put the company into liquidation. It will take 10 years for the court order to come. By that time, who knows, you will be dead. You want money? Great, I will give you the money. But you have to make certain concessions. You are supposed to collect 200 rupees from me. चुपचाप adjust करो, come down to 170. Accept it after 3 months from today. उसके बाद you go your way, I go mine. Simple solution. So this is exactly what internal reconstruction does. Sometimes you reduce the liability, you change the interest rates, you promise a delayed payment, and all of this is to ensure that the company gets back on track. Okay. So we'll be looking at one base situation and looking at it from three different viewpoints to understand how exactly can an internal reconstruction situation be tackled. Okay. Ab, wire construction has suffered from losses in the last 3 years. The statement of financial position at 31st of December 2001 shows assets, land and building, equipment, investment, current assets में inventory है, receivable है. Very good. You have total assets of 4,71,939. Now this company is apparently it has gone through losses, and the only way to revive is through an internal reconstruction. ठीक है. You have equity and liabilities. What are see? Although equity shareholders are owners, see, the company has taken money from the equity shareholders to run the business. They are given the owner status. But if the company were to go into liquidation, equity shareholders also want their money back, na? So that is, the 2 lakh that you see in front of equity shareholders, this is an amount that they would expect कि यार when the company shuts down, जिस दिन कंपनी बंद होगा, प्लीज हमें हमारा 2 लाख रुपए दे दो. Then there are your 5% cumulative preference shareholders to whom 70,000 is payable. Then see, profit and loss का negative balance है, मतलब these are losses, accumulated losses over the period. Then you have non-current liabilities में 8% का डिबेंचर, ट्रेड पेएबल्स में 112,247, इंटरेस्ट पेएबल में 12,800, ओवरड्राफ्ट में 36,713. ठीक है. Sales have been particularly difficult to achieve in the current year, and inventory levels are very high. Interest rate has not been paid for 2 years. The debenture holders have demanded a scheme of reconstruction or the liquidation of the company. बंद करो, पैसे दो, या फिर go for a reconstruction. Show the likely position of the key stakeholders if the firm goes into liquidation. Assume that investment is to be sold at the current market price of 60,000. 10% receivables are to be written off. The remaining assets were professionally valued as follows. Now, what do we
अब लिक्विडेशन में क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, टू लिक्विडेट मीन्स ऑल द असेट्स दैट यू हैव, यू विल sell them, you will get cash, and then all these people to whom you owe money, you will pay them their money. ठीक है? So here's what will happen. The investments are, how much investments are worth? 27,000, they will be sold for 60,000. ठीक है? Then land is 80, building is 80. This is the professionally valued amount, which means if you go out to sell it today, this is the money that you will be making. Kitna? You will be making 2,40,000. 10% of the receivables are to be written off. How much receivable do you have? You have 70,692. इसमें से 10% नहीं मिलेगा तो कितना मिलेगा? 63,623. ठीक है? All the assets will be sold at whatever the current market value is. From the proceeds 363,623, ये जो proceeds है इसमें से you will now start paying off the, you will first of all you will have to pay the outsiders. ठीक है? आउटसाइडर में सबसे पहले कौन आता है? आउटसाइडर में सबसे पहले आता है डिबेंचर होल्डर. Why debenture holders? Understand that. Why not creditors? The idea is that you will pay your secured creditors first and then you will pay the unsecured ones. तो अगर secured loan और unsecured loan होता, you would have paid secured creditors as secured lenders first and then unsecured. तो डिबेंचर होल्डर्स को पे करो 80,000. ठीक है? देन कम्स बैंक ओवरड्राफ्ट अमाउंट पेएबल टू बैंक. ठीक है? देन कम्स इंटरेस्ट पेएबल एंड देन यू हैव, these are your unsecured debts. ठीक है? So always pay the outsiders first. Now if you remember in SBR we had studied, equity shareholders are called residual owners of the company. Residual मतलब बचा हुआ, whatever is left after everything else has been paid off. ठीक है? So from 363,623 you paid 80,000 to debenture holders. ओडी रीपे कर दिया, इंटरेस्ट री पे कर दिया, वट एवर वॉज आउटस्टैंडिंग, ट्रेड क्रेडिटर्स को पैसा दे दिया. यू आर लेफ्ट विथ 121,863. नाउ हु स्टैंड्स नेक्स्ट इन लाइन? द प्रेफरेंस शेयर होल्डर स्टैंड नेक्स्ट इन लाइन. उनको पैसा दे दो. उसके बाद वॉट एवर मनी इज लेफ्ट, पे दैट टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स. ठीक है? नाउ वेन एवर द कंपनी गोज इन टू लिक्विडेशन, द ऑर्डर ऑफ रीपेमेंट इज secured providers of finance first, unsecured providers of finance second, then preference, then equity. And that too if any amount is left. अगर नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा, फिर रोते रहो. Debentures usually cannot be issued by a company unless it has created a charge on assets. Unless you have provided a security, you will not be able to issue debentures mostly, in most cases. So, debentures are often considered to be, they will be assumed as secured loan unless there is a statement contrary to that. Okay, so that is the second part. Then, what else? ओवरड्राफ्ट इज लोन रीपेएबल ऑन डिमांड. सी ओवरड्राफ्ट के केस में भी ना, द कंपनी हैज टू क्रिएट अ फ्लोटिंग चार्ज ऑन इट्स इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल्स एंड ऑल ऑफ दैट. तो उसमें भी चार्ज होता है, विच इज वाई ओवरड्राफ्ट इज रीपेड बिफोर द अदर क्रेडिटर्स एंड ऑल ऑफ देम आर रीपेड. ठीक है? देन बाकी के करंट लाइबिलिटी को पैसा दे दो. दिस इज हाउ अ लिक्विडेशन सिचुएशन इज हैंडल्ड. ठीक है? बहुत बेसिक सा है मतलब, बट दे डोंट आस्क ऑल्सो एज मच, इतना फ्रीक्वेंटली दे डोंट आस्क, बट आई थॉट एक बार देख लेते हैं. ठीक है? तब सेम सिचुएशन कंटिन्यूइंग विद द वायर कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन. ड्यू अब ये रिकंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन है. ठीक है? दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑन लिक्विडेशन. दिस पार्ट इज अबाउट रिकंस्ट्रक्शन. ठीक है? नाउ आई वॉन्ट समवन टू रीड दिस. हर्ष, पढ़िए इसको. हर्ष, Yes, sir. पढ़ो. Each ordinary share is to be redesignated as a share of 25 cents. The existing 70,000 preference shares are to be exchanged for a new issue of 35,000 8% cumulative preference shares of $1 each, and 140,000 ordinary shares of 25 cents each. The ordinary shareholders are to accept a reduction in nominal value of the shares from $1 to 25 cents and subscribe for a new issue on basis of 1 for 1 at a price of 30 cents per share.
The debenture holders are to accept 20,000 ordinary shares for 25 cents each in lieu of interest payable. It is agreed that the value of interest liability is equivalent to the nominal value of the shares issued. The interest rate is to be increased to 9.5% and the repayment date deferred for 3 years. A further $9,000 of this 9.5% debenture is to be issued and taken up by the existing holders. The profit and loss account balance is to be written off. The bank overdraft is to be repaid. It is expected that due to the refinancing, operating profits will be earned at the rate of $50,000 per year after depreciation but before interest and tax. Okay, एक सेकंड ना. हाँ. Now, what is this thing? Each ordinary share is to be redesignated as a share of 25 cents. When they say redesignate, see, equity share in this case had a face value of $1, which means how much was the company supposed to pay to the shareholders if the company went into liquidation? Ideally, it owed them $1 per share should the company go into liquidation. Owed is not the right word, but chalo, let's use that word right now. ठीक है. But now they are saying कि यार we are going to reduce the face value so that the amount that would have to be paid to the shareholders is substantially reduced. ठीक है. So don't, in the future the face value will not be $1, it will be $0.25. ठीक है. वन फोर्थ कर रहे हैं हम उसका फेस वैल्यू. Shareholders have to accept it कि भाई the amount that we will get from the company should it go into a liquidation later is not going to be $1, it is going to be $0.25. ठीक है. The ordinary shareholders are to accept a reduction in their nominal value of their share from $1 to 25 cents and subscribe for a new issue on the basis of 1 for 1 at a price of 30 cents per share. Basically, you are standing like a beggar in front of the equity shareholders कि यार please accept a reduction in the face value and उतना नहीं, 2 दिन से कुछ नहीं खाया वाला सिचुएशन है. Pay us 30 cents per share. मतलब at a price of 30 cents per share, please subscribe to new shares of the company. One is 1 for 1. ठीक है. Then existing 70,000 preference shares are to be exchanged for a new issue of 35,000 8% cumulative preference share of $1 each and 140,000 ordinary shares of 25 cents each. Earlier preference shareholders को you were supposed to pay them कितना? You were supposed to pay them 70,000 preference shares of $1 each. You are converting that to 35,000 8% cumulative preference shares of $1 each and 140,000 ordinary shares of 25 cents each. ठीक है. तो उसके बदले में व्हाट आर दे गेटिंग? 35,000 8% क्यूमुलेटिव शेयर्स एंड 140,000 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ 25 सेंट्स. ठीक है. अब हाउ टू डील विद दिस? ठीक है. टोटल अमाउंट पेएबल टू 5% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कितना था? 5% वॉज द नॉमिनल रेट. ठीक है. यू आर सपोज टू पे देम 70. In the scheme of reconstruction, the company, in exchange of 5% preference shares amounting to 70,000, will give them 8% preference shares worth 35,000, 1,40,000 ordinary shares with a face value of 0.25. कितना? 35,000. तो what are you giving them? You are giving them preference shares worth 35 and 1,40,000 equity shares. Each has a face value of 0.25. ठीक है. अब let's see what is happening to the equity shareholders. Current number of equity shares in issue was 2 lakh. Current face value was 1. Redesignated face value is 0.25. तो अभी amount to be shown in the balance sheet कितना हो जाएगा? 50,000 हो जाएगा. Correct. Now preference shares have been converted to equity. कितना वैल्यू का कन्वर्ट हो गया? 1,40,000 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ 0.25 सेंट्स ईच. तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा प्रेफरेंस शेयर converted to equity 35,000 which came from working note 2. Then if you observe, adjustment 3 में लिखा था कि ordinary shareholders will subscribe for a new issue on the basis of 1 for 1 at a price of 30 cents. Now the redesignated face value कितना बोला है आपने? 0.25 cents बोला है. उस पे आप अभी 0.30 cents कर रहे हो at as the issue price. So 0.05 is the amount of share premium.
ठीक है, मतलब इनका कॉन्फिडेंस देखो, हाँ कंपनी लॉस में है, रिकंस्ट्रक्शन में जा रहे हैं, एंड दे आर इशूइंग शेयर्स एट अ प्रीमियम। ठीक है ना, 1 for 1 है, एग्जिस्टिंग शेयर्स वर 2 लाख, 1 for 1 मतलब न्यू शेयर सब्सक्राइब विल ऑल्सो बी 2 लाख, इशू प्राइस इज 0.3, ठीक है, फेस वैल्यू इज 0.25। सो व्हाट विल बी द अकाउंटिंग एंट्री? अकाउंटिंग एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम, बैंक अकाउंट डेबिट 60,000 टू शेयर कैपिटल 50,000 टू शेयर प्रीमियम 10,000। दिस विल बी द अकाउंटिंग एंट्री। ठीक है, अब आप बैलेंस शीट में 10,000 का शेयर प्रीमियम लिखेंगे, इक्विटी शेयर में ऐड कर देंगे। देन व्हाट नेक्स्ट? द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस इज टू बी रिटन ऑफ। जो पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस था, दैट इज डेबिट बैलेंस था, यू हैव टू रिमूव इट फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। द बैंक ओडी इज टू बी रीपेड, ओके। It is expected that due to refinancing, operating profits will be earned at the rate of 50,000 per year after depreciation, but before interest and tax. Corporation tax rate is 21%. Investments were sold off for 60,000. ये एक पॉइंट हमने छोड़ दिया है so far. All debenture holders are to accept 20,000 ordinary shares of 25 cents in lieu of the interest payable. ठीक है, अब इंटरेस्ट पेएबल कितना था? इंटरेस्ट पेएबल टू देम वाज 12,800। ओके, दे आर गोइंग टू एक्सेप्ट shares of 20,000 shares of 25 cents each in lieu of the interest payable. It is agreed that value of interest liability is equivalent to the nominal value of shares issued. The interest rate is to be increased by 9.5% and interest payable date deferred for 3 years. तो पेएबल था 12,800, यू आर गिविंग देम 20,000 शेयर्स, ठीक है, इनटू फेस वैल्यू है 0.25, ठीक है, तो 5,000, 7,800 is left, that will get transferred to share premium. Why did I do this? Because यहाँ पे लिखा था in exchange of the 12,800 interest payable to them, they are accepting 20,000 ordinary shares in lieu of that, मतलब in settlement of that, उन्होंने, they have not forgiven any amount, हाँ? In this case, they have not forgiven any amount that you were supposed to pay them. They are accepting equity shares in exchange. तो जो बचा हुआ अमाउंट है, that will go to share premium. ठीक है, सो कितना जाएगा शेयर प्रीमियम में? 7,800 will go to share premium. ठीक है, इंटरेस्ट पेएबल एज पर बैलेंस शीट 12,800, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इन एक्सचेंज, दिस इज द कैलकुलेशन, सो इशू प्राइस मस्ट बी 0.64। एक बार ये देख लो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वाला नोट। नहीं मुझे इंस्टा खोला तो रील बच, आई डोंट बी सो सरप्राइज, इवन आई एम ह्यूमन, कभी कभी मैं भी खोलता हूँ इंस्टा। डन सर। ठीक है, अब that is not all that will happen in debentures. Interest rate is to be increased to 9.5% and repayment date deferred for 3 years. A further 9,000 of this 9.5% debenture is to be issued and taken up by the existing holders.
ठीक है। सो इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाएगा 9.5, एंड फर्दर 9,000 ऑफ दिस 9.5% डिबेंचर इज टू बी इशूड एंड टेकन अप बाय द एग्जिस्टिंग होल्डर्स, मतलब न्यू डिबेंचर इशू ऑफ अनदर 9,000। ठीक है। दिस इज सिंपल फर्दर इशू का एंट्री है। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9.5% डिबेंचर अकाउंट। ओपनिंग कैश बैलेंस कुछ था नहीं आपके बैलेंस शीट में, यू हैड नथिंग टू गो बाय, सो जीरो। यू सोल्ड द इन्वेस्टमेंट एट 60,000। ठीक है। वर्किंग नोट वन में देखो, यू गॉट हाउ मच मनी बाय फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, यू गॉट 60,000 इन फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है। सो दैट इज एन addition. देन यू इशूड फर्दर 9.5% डिबेंचर्स फॉर 9,000, तो आपके पास टोटल कितना हुआ? 1,29,000। यू रीपेड द बैंक ओडी 36,713, यू आर लेफ्ट विथ 92,287। ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन इज, we'll have to reconstruct the balance sheet. ठीक है। लैंड बिल्डिंग इक्विपमेंट, these are the professionally updated valuations that were given to you, है ना। 80-80-30 लिख दिया आपने। इन्वेस्टमेंट्स हैव बीन सोल्ड ऑफ। इन्वेंट्री एंड वर्क इन प्रोग्रेस 50,000, you took it from here। ठीक है। देन डेटर्स हैड लॉस्ट 10% ऑफ द वैल्यू इरिकवरेबल, एंड अपडेटेड कैश बैलेंस इज 92,287। अभी लाइबिलिटी साइड में देखो, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 140, 140 कैसे आया? 2 लाख बिकेम 50। ठीक है। देन 35,000 प्रेफरेंस गॉट कन्वर्टेड टू इक्विटी। देन फ्रेश इशू में ऐड हुआ अनदर 50, एंड इक्विटी शेयर्स इशूड अगेंस्ट इंटरेस्ट पेएबल था 5,000। टोटल अमाउंट इज 1,40,000। ठीक है। ये 1,40,000 कहाँ जाएगा? 1,40,000 विल बी ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। 17,800 will be share premium. How? 10,000 share premium from this entry. 7,800 share premium from working note 3, which is with respect to conversion of debentures. You will arrive at 17,800। ठीक है। उसके बाद 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो 70 का कन्वर्ट होके हो गया था 35,000। लॉन्ग टर्म डेट्स में 9.5% डिवेंचर्स। ओरिजिनल बैलेंस शीट में कितना था? ओरिजिनल बैलेंस शीट में था 80, उसमें ऐड हुआ और 9,000 हो गया 89,000। ठीक है। एंड देन ट्रेड पेएबल्स आर प्रिटी मच द सेम। नाउ हियर द बैलेंसिंग फिगर इज योर गेन और लॉस ऑन रिकंस्ट्रक्शन। तो जो भी साइड में बैलेंस कम होगा, यू गो एंड राइट देयर। बट हाउ इज दिस 1863 अराइव्ड एट? एग्जाम में तो आप बैलेंसिंग फिगर करके डाल दोगे, बट प्लीज अंडरस्टैंड हाउ इज दिस 1863 अराइव्ड एट। ठीक है। एक बार रीड नोट 1 एंड 2। ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट?
This is basically gain or loss that you have suffered in this entire process. ठीक है। अब रियल लाइफ में करना पड़ेगा ये सब, एग्जाम में यू डोंट हैव टू डू इट। यू सी इक्विटी शेयर्स, अमाउंट पेएबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स वाज एट द फेस वैल्यू ऑफ 1 per share इट वाज 2 lakh। ठीक है। नाउ अमाउंट पेएबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन इज 50,000। अमाउंट पेएबल हैज रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, 1,50,000 इज लाइक अ गेन। ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करना था 70, what they got in exchange was also worth 70, so there is no gain here। Amount payable to debenture holders was 12,800 for interest, what they got in exchange was also worth 12,800, so no gain no loss। क्या हुआ? On equity shares you gained 1,50,000 because you don't have to pay that amount anymore। now you wrote off the P&L का बैलेंस, P&L का बैलेंस हटा दिया बुक्स में से, adjust it against this game। देन लैंड एंड बिल्डिंग का रिवैल्यूएशन हुआ, ऑब्जर्व करो, लैंड एंड बिल्डिंग वाज इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट 193,246, मिला के नाउ इट इज एट 1,60,000। सो 33,246 का रिवैल्यूएशन गेन था। ठीक है। देन टॉकिंग अबाउट इक्विपमेंट, इक्विपमेंट वॉज इन माई बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर 60,754, उसमें से 30,000 वॉज नॉट, वैल्यू इज 30,000, सो यहाँ पे भी देर वॉज अ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 30,754। इन्वेस्टमेंट्स के केस में ऑन द कॉन्ट्ररी इट वॉज क्वाइट द ऑपोजिट। इन्वेस्टमेंट्स वर फॉर 27,000, यू सोल्ड देम फॉर 60, सो यू हैड अ गेन ऑफ 33,000। ठीक है। देन इन्वेंट्री कितने का था? इन्वेंट्री था 120,247 का, वो कितने का हो गया? इन्वेंट्री हो गया 50,000 का, तो 70,247 का लॉस था। एंड यू लॉस्ट 10% ऑफ रिसीवेबल्स एज इररिकवरेबल। सो ये पूरा नेट ऑफ करने के बाद what you are left with is an amount of 1863, which is like the gain on reconstruction। this can be a loss also, quite possible। अब ये आपको, you are not supposed to prepare this in the paper, which is why I have written it in bold letters at the top, because you will not have the time to do it। आप पेपर में वॉट एवर इज द बैलेंसिंग फिगर राइट ऑन क्रेडिट साइड और डेबिट साइड एंड योर जॉब इज डन। ठीक है। दैट्स ऑल दैट यू हैव टू डू। ठीक है। आर यू विथ मी? Yes, sir. Now, as I said, this question type has not been asked in the longest time। In fact, अभी एग्जाम किट में ना you will not even find questions that are anyway close to this। तो नहीं मिलेगा आपको। बट आई जस्ट थॉट कि यार एक बार देख लेते हैं। ठीक है। नाउ समटाइम्स द क्वेश्चन माइट ऑल्सो से कि विल द शेयर होल्डर्स डिबेंचर होल्डर्स एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर प्रपोजल, वो भी कभी कभी पूछा जाता है। आई थिंक M&A क्वेश्चंस में भी दे आस्क यू। ठीक है। सो advise the shareholders and debenture holders of whether they should support the reconstruction scheme। See, debenture interest payable to debenture holders has not been paid. In exchange, there is naturally a situation possible that they become unhappy, they become disgruntled with the company। Now, if the company is not able to realize the appropriate amounts from disposal of assets, the claim of debenture holders will not get honored and they will not be able to get anything on the without the reconstruction route। So they will have to be convinced here we are increasing the interest rate from 8% to 9.5%। if you ask for money now you will not get anything or you will hardly get anything। if you promise to wait, we can we have a good chance at revival of the company, and that is how you will approach that situation। so the it will have to be explained to them in terms that they understand, so that they are also in line with the whole reconstruction idea that you have put forward। ठीक है। So this is pretty much everything that is there from a numerical questions वाला perspective। ठीक है।